वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू श्रीलंका सीरीज एंड नाउ हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है Trincomalee. From our location Kurunegala, it is showing almost 200 kilometers and Uber is showing almost 22,000 LKR plus some tolls. However, being a solo traveler, we took local transport and it costed us only 833 LKR. Now we are in Trincomalee and the tourist spots are Fort Frederick and a temple nearby, Maritime and Naval History Museum, Ors Hill Army Museum. This will be covering in the last. Beaches in Trincomalee are very neat and clean with white sand. Nella Valley Beach, Trincomalee Beach. Also, we'll be going to Kanaya Hot Water Springs. These are natural. And now we are in the local market of Trincomalee. छोटा सा ही market है, but we have everything available here. And in this market, you can also exchange your currency into local Sri Lankan money, or you can do the shopping. Here we have Bata also, which is very popular in India. This road goes straight down to Fort Frederick, Trincomalee Beach and Tirukoneshwaram Temple. And here we are, Trincomalee Clock Tower. As seen, all the cities have one clock tower to gather some tourist attraction. So guys, the most amazing part on this road is the deer park. Yes, अब जैसे इस रोड पे वॉक करेंगे तो आपको खुले एरिया में ऑन द मेन स्ट्रीट डियर्स मिल जाएंगे चारों तरफ, ऑन द स्ट्रीट, राउंड द कॉर्नर, एवरीवेयर. एंड आप उन्हें जाकर फीड भी कर सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा गार्बेज पड़ा है. हाउएवर, आई पर्सनली फील दैट श्रीलंका इज क्वाइट क्लीन एंड द लोकल अथॉरिटीज शुड गेट दिस एरिया क्लीन्ड on priority basis, as there are a lot of tourists from all over the world and it really does not look good. Also not good for the deers as they are eating plastic as well along with the food lying over there. हम और थोड़ा आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में इन्होंने एक डियर के लिए फीडिंग पॉइंट बनाया है जहाँ से आप फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले सकते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज डियर फीडिंग पॉइंट. एंड जस्ट इसके पीछे आप जाकर डियर को फीड कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन. चलिए देखते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पर फीड कर रहे हैं डियर्स को. चलिए लेट्स गो लिटिल मोर इनसाइड टू द फीडिंग पॉइंट. वाओ, एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डियर्स एंड पीपल आर फीडिंग देम डायरेक्टली एंड यू कैन टेक द वेजिटेबल्स फ्रॉम देम एंड फीड देम. सो गाइज, नो बैरियर्स, नो रिस्ट्रिक्शंस. आप जाकर उन्हें छू भी सकते हैं, खिला सकते हैं और आराम से उनके साथ खड़े रह सकते हैं. एंड देयर इज नो इशू एट ऑल. और यहीं पर एक बोर्ड भी लगा है, डियर फीडिंग प्रोग्राम एंड स्पॉन्सर्ड बाय IOC लंका. दैट्स अ नाइस इनिशिएटिव. सो गाइज, यू एंजॉय विद म्यूजिक feeding of deers for some time. I'll be back in a minute. So I'm sure you must have enjoyed it. चलिए इसी रोड पे स्ट्रेट डाउन चलते हैं आगे. यहाँ पर एक सुपर लाइन की बस खड़ी थी जिसकी डिटेल्स मैंने आपके लिए शेयर कर दी हैं. यहाँ पर उनकी वेबसाइट और हॉटलाइन नंबर भी. सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हॉटलाइन नंबर पे फॉर टिकट्स एंड इंक्वायरीज. चलिए चलते हैं इसी रोड पे स्ट्रेट डाउन टुवर्ड्स द बीच. जैसे ही हम इस रोड पे आगे चलेंगे, लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा बुद्ध भगवान का स्तूपा आता है एंड एक टेम्पल है. एंड टू योर राइट साइड इज Trincomalee बीच. वेरी वाइड, वेरी वास्ट एंड वेरी नीट एंड क्लीन. Trust me guys, you can enjoy early morning sunrise here or evening sunset also. It's beautiful and while returning we will see this. And to your left is the way to Tirukoneshwaram temple and Fort Frederick. Also यहाँ पर left side में है 2nd Battalion, the Gajapa Regiment. And to your right it's lovely sea and the beach. And we have to walk down the road to go to the Fort Frederick एंड तिरुकोनेश्वरम टेम्पल. चलिए चलते हैं इस रोड पर स्ट्रेट डाउन एंड देखते हैं कैसे है एंट्री. यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ कैनन्स भी लगी हैं फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स. ऑल्सो एक सिग्नल लाइट या फिर रेड लाइट ब्लिंक कर रही है. आई हैव नो आइडिया कि ये
क्यों कर रही है. So this is the check post, but कोई नहीं है यहाँ पर. And just for your information, this area has been declared as polythene and plastic free zone. So whenever you are coming, please make sure you don't have any of these items in your hand. वैसे तो किसी ने कुछ बोला नहीं, but still it's better to be safe than sorry. And this is the entry of Fort Frederick, or also Thirukuneshwaram temple on the left side. And the year mentioned on this entry is 1675. Wow. Also इस पे लिखा है फोर्ट फ्रेडरिक. चलिए एंट्री करते हैं. अगेन टूरिस्ट स्पॉट और कंडीशन खराब हो रही है. I don't know, but I think the local authorities should do something about it. So guys, it's a nice walk till the Thirukuneshwaram temple. If you guys are having a vehicle, then please go ahead, but I would suggest park it outside and take a walk. It's lovely, nice and beautiful. Also there are some wild animals around like deer, which we saw earlier, and also some peacocks. So you would reduce some emission out here. And this is the entry to राजा महाविहारया. यहाँ पर बुद्ध भगवान के टेम्पल्स हैं और आप आगे जाकर ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं जहाँ पर एक बुद्ध स्तूपा और बुद्ध भगवान की स्टैचूज हैं फेसिंग टुवर्ड्स द सी. एंड यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है रिटन समथिंग इन श्रीलंकन लैंग्वेज. चलिए लेट्स गो अप बाय क्लाइंबिंग सम स्टेयर्स. जब हम यहाँ पर स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे थे तो हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक स्टेयर्स पर बार कोड लगा हुआ दिखा जिस पे लिखा था स्कैन मी फॉर इन्फॉर्मेशन. चलिए स्कैन करके देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है ये. सो एज सून एज वी स्कैन दिस बार कोड, यहाँ पर एक फोर्ट फ्रेडरिक ट्रिनकोमली का पेज खुला जिसमें एक शॉर्ट वीडियो एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑल्सो द प्लेस टू विजिट इन फ्रेडरिक फोर्ट एंड थिंग्स टू बी कंसर्न अबाउट द टूरिस्ट एंड अदर काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो देन यू कैन ऑल्सो स्कैन वेर एवर यू आर इन वर्ल्ड एंड यू कैन गो थ्रू अबाउट फोर्ट फ्रेडरिक ट्रिनकोमली. यहाँ पर हम आगे ऊपर बढ़े तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं एंड विच हैव मैनी रूम्स ऑल्सो. एंड यहाँ पर ऊपर स्तूपा के पास बुद्ध भगवान की दो स्टैचूज बनी हुई हैं एंड दोनों आर फेसिंग टुवर्ड्स द सी. One is in sitting posture and the second one is standing posture. The sitting one is made up of some metal and the second one, which is in standing posture, is made up of some material. It is in white in color. And यहाँ से पूरा sea का view बहुत ही सुंदर है. You can come, do the prayer and later on you can sit around and enjoy the sea as well. The view is so mesmerizing and beautiful. You can actually enjoy for long time by sitting here with fresh air. Heaven on earth. Guys, trust me, you can actually sit here and enjoy for long time. चलिए let's go down. एंड जब हम नीचे उतर रहे थे तो हमने साइट किया एक बहुत ही सुंदर सा पीकॉक freely roaming around. No cages, no barriers. That's the beauty of nature. चलिए कंटिन्यू करते हैं टू फोर्ट फ्रेडरिक इनसाइड एंड तिरुकुनेश्वरम टेम्पल. और आप एंजॉय कीजिए थोड़ी देर के लिए रास्ता विद म्यूजिक. वेरी ब्यूटीफुल वे. और गाइज यहाँ भी ऑर्स हिल आर्मी म्यूजियम का एक बोर्ड लगा है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम दिस लोकेशन एंड विल बी विजिटिंग टुडे इटसेल्फ. So the opening hours are 7 a.m. to 5 p.m. for Dutch fort.
for the tourists, and this is the price what you have to pay. Also note that for SAARC countries the price is half, but most of the places they're asking for passport. So please make sure you are carrying your passport to save your money. And at last हम लोग पहुंच गए हैं तिरुकुनेश्वरम टेम्पल पे, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पे पूजा टाइमिंग्स भी लिखी हैं। एंड एज यू क्लाइंब अप, जस्ट एंट्री पर आपको शिव भगवान की एक बहुत बड़ी स्टैचू देखने को मिलेगी, जिस पर एक हाथ के ऊपर हिरन भी इन्होंने दिखा रखा है। एंड दैट्स व्हाई वी सॉ सो मेनी डियर वाइल कमिंग ऑन द वे डाउन, एंड ऑल्सो एक डियर पार्क भी बनाया हुआ है इसी चीज़ के लिए। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस। एंड टू द राइट साइड ऑफ दिस स्टैचू इज रावणास कट या फिर रावण वेतु, जिसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। और ये है एंट्री टुवर्ड्स द टेम्पल जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू। और यहाँ पर एक नंदी एंड शिवलिंग भी बने हैं एंड विद त्रिशूल। और जब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक पूजा स्थल बनाया हुआ है, जहाँ पर आप नारियल लाकर फोड़ सकते हैं डायरेक्टली। आप अपना उसे प्रसाद की तरह भी ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग नारियल तोड़ रहे हैं डायरेक्टली, एंड बाद में ये लोग इसे उठाकर भी ले जा सकते हैं एज प्रसाद। So guys, no photography was allowed inside the temple. So we are coming back now to रावण वेतु। यहाँ के लिए सेइंग है कि जब रावण यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे एंड लॉर्ड कुनेश्वरा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो रावण गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही ट्राइड टू कट द माउंटेन बाय हिज स्वॉर्ड, एंड नाउ दिस इज पॉपुलरली नोन एज रावणास कट। एंड बिफोर एंटरिंग द टेम्पल यू विल हैव टू रिमूव द शूज़। एंड यहाँ पर इन्होंने एक अरेंजमेंट भी बनाया है जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 20 श्रीलंकन रुपीज़। एंड वाइल कमिंग डाउन वी मैनेज टू कैप्चर द ब्यूटिफुल सनसेट, एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल गाइज। आई एम श्योर you will enjoy once you are here. Now our next stop is Kanaya Hot Water Springs. जी हाँ, natural hot water springs. As I said earlier, the roads in Sri Lanka are just amazing. Some of the travel to Kanaya Hot Water Springs with music for you guys. एंड एट लास्ट वी आर एट हॉट वेल्स कन्हैया। जी हाँ, हम पहुँच गए हैं हॉट वाटर वेल्स पे नेचुरल कन्हैया पे। यहाँ से एंट्री से करीब 1 किलोमीटर है इनसाइड, और यहाँ पर पार्किंग भी है, और यहाँ से करीब आपको 200 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली वॉक करना पड़ेगा टिल द वाटर वेल्स। और जस्ट उससे पहले यहाँ पर है लोकल मार्केट। यहाँ पे आप खरीद सकते हैं लोकल स्टफ, बट नॉट ऑफ that good quality. Also you can have some coconut water. चलिए चलते हैं अंदर की तरफ एंड लेट्स सी क्या मिलता है हमें आगे। So this is the entry to कन्हैया हॉट वेल्स। इसी में थोड़ा सा आगे जाकर आपको टिकट भी लेना पड़ेगा फॉर द एंट्री टू हॉट वेल्स। एंड अगर आप लोकल हैं तो प्राइस डिफरेंट है, एंड फॉर टूरिस्ट द प्राइस इज डिफरेंट। अगेन यहाँ पर भी ऑर्स हिल्स आर्मी म्यूजियम का बोर्ड लगा हुआ है, एंड सून विल विजिट द ऑर्स म्यूजियम एज वेल। एज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन श्रीलंका, यहाँ पर भी ग्रीनरी बहुत है, एट एवरीवेयर यू कैन सी लॉट ऑफ ट्रीज। एंड हियर वी आर एट द एंट्रेंस। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है बट स्टिल ओके। एंड यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप लोकल हैं तो आपको देने पड़ेंगे 50 LKR,
और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको देने पड़ेंगे 100 LKR, नॉट टू मच। और यहाँ से थोड़ा सा आगे और चलना पड़ेगा, और जैसे ही आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो सामने आपको हॉट वेल्स दिखेंगे एंड द व्यू इज़ ऑल्सो सुपर्ब हियर, everywhere greenery and so clear sky. It's lovely, guys. So this is the main entry to the hot water wells, and here as you can see a group of guys enjoying hot water, and there are 6 wells, and no matter how much water you take the level remains same, and only thing is no soaps are allowed in this area, and they have given small buckets also by which you can take out the water and enjoy the hot water bath. And now, once we are done with Kanaya hot water wells, let's have coconut water. And the coconut water in Sri Lanka never fails to amaze me. It's always full and sweet like anything. आप कभी भी कहीं से भी लीजिए, बट ये हमेशा स्वीट ही निकलेगा. And the cost is 150 Sri Lankan rupees and maybe little bit more depending upon the location. Now next spot is the Pigeon Island. जी हाँ, we are heading to Pigeon Island. And just before entering to the beach, आपको यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स दिख जाएंगे डाइविंग सेंटर्स के, which give you plenty of sports, water sports options. You can contact them and can arrange the trips and tours. This is the main entry or the main entry road to the Pigeon Island, just to the beach. Here we are on the beach. Again guys, the beach is neat and clean, very beautiful, and here we can see many tourists and the Pigeon Island. But sad, today because of the weather, all the trips to the Pigeon Island are cancelled. So we won't be able to go to the Pigeon Island. Here is the Pigeon Island. Pigeon Island is the best place to do snorkeling in Sri Lanka, and it is located near Upu Valley and Neela Valley beaches. Tiny Pigeon Island is approximately 200-meter long and 100-meter wide. As we could not make our way to the Pigeon Island, so we took a walk on the beach, and here we found jellyfish attached to a shell, and to our surprise it is alive. As we picked it up and left it again, and you can see the movement, or the jellyfish is trying to go inside the sand. Continue to enjoy the beach and the Pigeon Island from far away with some music. I'll get back to you. Again guys, as you can see, the beach is so neat and clean and so huge. Wherever you see, it's all white sand and the sky is so clear. Beautiful, isn't it? What do you say guys?
And guys, on the way back, there is a Hindu temple on the right side. If you would like to visit, you can go ahead. But due to time crunch, we could not give a visit to the temple. And the next point or the tourist spot will be Ors Hill Army Museum, and this will be the last tourist spot in Trincomalee. There are so many things to see in Ors Museum, so I have made a separate video to be seen. I hope आपको video पसंद आएगा. In this video, you can see the entry to the Ors Museum and also the ticket counter from where you can buy the ticket, and the cost of the ticket is 100 Sri Lankan rupees. The museum can be covered within 1 hour or 1.5 hours. So this is the ticket for Ors Hill Army Museum, and this is the entry board. I hope आपको video and information पसंद आए. So keep watching Sri Lanka series and don't forget to share, subscribe and like. Thank you.